Right. Hello, everyone. Good evening. Good to be back. I don't know how many of you are there, but as of now, but yeah, it's good to be back and good to have you all back as well. And सबसे पहले I'm sorry, बहुत दिन से वीडियो वगैरह नहीं डाले because kind of been traveling a bit, थोड़ा सा went and did the World Cup under 19 वगैरह. So any which way, it's good to be back. And yeah, आज we will be talking about obviously the IPL auction, which was one very long. एक के बाद एक चल ही रहा था ऑक्शन कल भी रात के 8 साढ़े 8 बजे खत्म हुआ एंड या एंड कपल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑब्वियसली franchises mega auction maybe the last mega auction uh, and couple of interesting things is venue was very important क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि फिलहाल चांसेस आर कि सिर्फ बॉम्बे और पुणे में होंगे मैचेस मतलब चार वेन्यूज चार वेन्यूज मतलब वानखेड़े आई ब्रबॉन स्टेडियम डीवाई पाटिल और पुणे स्टेडियम अपार्ट फ्रॉम द डीवाई पाटिल अगर बाकी दो आप देखें स्टेडियम बहुत छोटे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव अ लॉट ऑफ टीम्स हैव chosen to invest more into their fast bowlers than spinners. तभी अगर आप इफ यू सी ट्रेंड इस ऑक्शन का तो फास्ट बॉलर्स काफ़ी लिए हैं लोगों ने और साथ में फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छे पैसे भी खर्च किए हैं द टॉप द बिग मनी सो टू से हैव गॉन विद द फास्ट बॉलर्स वेल यू नो व्हाट मैं let's just start straight away with questions here. I'm sure we'll cover all the teams through your questions. And yeah, or last may just a quick update about all about the channel and about all the teams. But let's just start taking questions. So start with Venom. Sir, what are your thoughts about KKR as they have good first playing 11 but don't have same quality backups? Okay, my first thing about KKR is, and you've rightly mentioned, अगर प्लेइंग 11 में देखता हूँ और मैंने एक रफ प्लेइंग 11 सबके मैंने बना रखे हैं दैट्स हाउ आई सी अ स्क्वाड एंड अ टीम वहाँ पे प्लेइंग 11 इज नाइस वेंकटेश अय्यर माइट ओपन विद अजिंक्य और शेल्डन जैक्सन श्रेयस अय्यर नीतीश राणा सैम बिलिंग्स को भी ले रखा है रिंकू सिंह बाबा अजीत मिडल ऑर्डर अनुकूल रॉय बट येस बॉलिंग वाइज आंड्रे रसल पैट कमिंस सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती शिवम मावी सब अच्छे दिख रहे हैं बट एज यू राइटली मेंशन वेनम कि प्लेइंग 11 अच्छा दिख रहा है बट द बिगेस्ट चैलेंज हियर इज आंड्रे रसल का फिटनेस के बारे में पता नहीं पिछले 2-3 साल से ही इज काइंड ऑफ हाफ द टाइम इज इंजर्ड सुनील नारायण सेम इंजरी फिर एक्शन वाला इशू वरुण चक्रवर्ती भी इंजरी सो अगर प्रॉब्लम वही है कि इफ दे कैन नॉट मैनेज द इंजरीज इफ दे आर नॉट फिट उसके बाद इट बिकम्स वेरी वेरी ट्रिकी क्योंकि उनके स्पिनर्स देखेंगे तो सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती क्वालिटी 8 ओवर्स वेरी गुड 8 ओवर्स लेकिन वही अगर उसमें से कोई एक भी अवेलेबल नहीं है then you're in trouble. Same with someone like Andre Russell. Yes, they have a kind of a replacement, Chamika Karunaratne, decent, good all-rounder, more generally fast bowling all-rounder, lekin obviously not in the same league as someone like Andre Russell. Batting maybe they have Alex Hales, but I don't know if अगर आप चार ओवरसीज देख रहे हैं तो could be yeah Alex Hales, Andre Russell, Sunil Narayan, and maybe Pat Cummins would ideally be there. 4 overseas is what I see here, unless they want to play Sam Billings in place of Alex Hales as a keeper. I think that is also a possibility. I think that is more of a possibility playing Sam Billings as a wicket keeper and as an opener or middle order. I think he's one guy who can play middle order or spin bhi acha khelte hain. So that's my first take about KKR and I agree with you Venom ki playing 11 ke alawa thoda sa tricky ho sakta hai. Right, quickly to the next one. Okay, Antariksh Jory सवाल है, is the 10-team IPL season for teams not able to find backups for playing 11? To a certain extent, yes, Antariksh. I understand कि थोड़ा सा तो इशू होगा बैकअप या डेप्थ बेंच में जो हम देखते हुए आए हैं लेकिन ओवरऑल आई थिंक डेप्थ वाइज भी सम टीम्स हैव डन वेल आई थिंक सम टीम्स काइंड ऑफ स्ट्रगल क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस साल
क्योंकि 10 टीमें हैं। और द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस माइट बी द लास्ट सो कॉल्ड बिग मेगा ऑक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टीम शायद वुड बी लुकिंग एट द फ्यूचर ऑल्सो। कुछ अच्छे बाइज, हालांकि लास्ट में काफ़ी सारे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को खरीदा है। लेकिन प्रिडोमिनेंटली मुझे वो थोड़ा-सा कुछ टीमों के साथ कम दिखा कि कीपिंग एन आई ऑन द फ्यूचर या यंगस्टर्स को एक यंगस्टर्स के बारे में। सो येस, व्हाइल आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा-सा बैकअप प्लेयर्स अच्छे मिलना मुश्किल होगा, बट यू एक्सपेक्ट कि यार इतने दिन से फ्रैंचाइज़ीज़ आर देयर, मोस्ट ऑफ दीज़ फ्रैंचाइज़ आर देयर फॉर अ व्हाइल, and they spend a lot of money and time and energy on scouting. So I think they've done all right. Some of them have done really all right with the backup also. All right. Ravi Kumar कह रहे हैं, how do you see Rajvardhan Hangargekar as an all-round option? I think he's work in progress. मुझे नहीं लगता वो अभी भी completely ready है. He's talented. मतलब जो जो चीज़ें चाहिए, ingredients चाहिए, वो सब है. He's a sound hitter of the ball. I won't say a batter, but a sound hitter. लंबे मारता है, पेस है, वो एटीट्यूड भी है कि मुझे फास्ट डालना है, आई हैव टू बोल क्विक। तो वो स्किल्स हैं, लेकिन क्या वो तैयार हैं? मुझे लगता है और एक आधा साल लगेगा उनको तैयार होने में। और एज एन ऑलराउंड मेरे ख्याल से ही इज मोर ऑफ अ बॉलर एंड अ लोअर ऑर्डर बैट जो आपको कुछ यूजफुल रन बना के दे सकते हैं। बट आई वुड नॉट कॉल हिम एज ऑफ नाउ एन ऑलराउंडर। आगे चल के इफ ही improves and works on his batting, it's a different issue. But as of now, I will not call him an all-rounder. Still call him a bowler who can give you some useful runs, Ravi. Right. ओके, अगला कौन है? आकर्षण गौरव, व्हाई सुरेश रैना वाज अनसोल्ड? फॉर आई थिंक ऑब्वियसली रीजंस बीइंग वेरी क्लियर। अगर आपने पिछले सीजन देखा होगा, सी लेट मी जस्ट पुट दिस पहले कि आई थिंक ही इज मिस्टर आईपीएल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। somebody, I think he's an IPL great. इसमें शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि ही इज एन आईपीएल ग्रेट। जिस तरीके से 10 साल पहले 10-11 साल उन्होंने खेला, लेकिन इन द लास्ट ईयर और कपल ऑफ इयर्स वो जो डिप आया है, एंड विच इज नॉर्मल यार, ही इज आल्सो 38, मे बी टचिंग 40 नाउ। तो I think is that way I can understand why players did not, but I was also a little surprised, Akarshan, क्योंकि जब 10 टीमें हैं and you have someone like सुरेश रायना जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो मे बी ही स्टिल गॉट अनदर ईयर और टू लेफ्ट। तो मैं यही सोच रहा था कि शायद वो एक्सपीरियंस के लिए एक आधा टीम ले ले कि चलो आप। पर थोड़ा सा ट्रिकी ये हो जाता है ना कि जब इतना कोई बड़ा प्लेयर आप लेते हैं तो आप उनको एज अ बैकअप थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इट विल बी वेरी वियर्ड इन अ ड्रेसिंग रूम कि सुरेश रैना है स्क्वाड में और खेल नहीं रहे। बट इवन देन आई थॉट कि एक आधा टीम शायद वोंट माइंड हैविंग समवन ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन द स्क्वाड। या बट स्ट्रेट अवे इन द प्लेइंग 11 आई थिंक जिस तरीके का फॉर्म दिखा है, ऊपर से ही हैज नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट। वो भी थोड़ा सा मैं ताजुब था कि सुरेश, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, हालांकि रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ है पिछले 2 साल से, 2 सीजन से, लेकिन T20 एज इन सैयद मुश्ताक अली हुआ है, विजय हजारे हुआ है, तो वहाँ पे भी कुछ खास ना उन्होंने खेला है ना प्रदर्शन देखा है। तो कहीं ना कहीं दैट ऑल्सो काइंड ऑफ थोड़ा सा वेंट अगेंस्ट हिम। सो ये मेरा शायद इस कारण सुरेश को नहीं लिया गया है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि you know wasn't a bad idea to have his experience in the dressing room. It would be awkward not make him play, and squad में रह के भी playing 11 में ना खिलाना would be a little awkward, but you rather have him than not have him. ये मेरा मानना है, that kind of experience. Yeah. Okay. आदि कुल श्रेष्ठ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, as RR has always settled their top 4 with likes of Yashasvi Devdutt and Joss, yeah. So whom do you think will play in the low middle order? And love to see you back, Deep sir. Thank you so very much, Adi. Okay, RR. यार पूरा एक डायरी लिखा हुआ है यार 2 दिन से। हाँ, तो RR का, या आई मीन व्हेन यू लुकिंग एट देयर टीम, ऑब्वियसली दे आर टॉप हैवी टीम। अब मुझे ये है कि जैसे आपने कहा,
Josh Butler is the only guy who can give you some value coming at four. संजू फोर सूट नहीं करता, यशस्वी और देवदत्त भी फोर सूट नहीं करता. तो आई थिंक व्हाट विल हैपन इज यशस्वी देवदत्त टू ओपन, Sanju at three, and Josh Butler at four. Ideally speaking, you want Josh Butler to open. I mean, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ideally that's what you want. But I think अगर यही है, see the other option is, and it'll be quite awkward कि आप यशस्वी को ना खिलाएं. I mean, let's not forget यशस्वी को retain किया था आरआर ने. The other option is maybe open with Josh Butler and have someone like a Ratty Vander Dusen in the middle order, or maybe even someone like Jimmy Neesham in lower middle order. वो एक है क्योंकि उनका lower middle order हालांकि हेटमायर है, but yeah. So yeah, interesting क्या करेंगे, but ideally speaking I'd say Yashasvi, Devdutt, Padikkal to open, Sanju at three, Josh Butler at four, in this current top four. Right. Adi, thanks. Yeah, thanks again. Austin Dikuna, hi Austin, how are you doing? It's a long time no see. Exactly. Your thoughts on the RCB? Will presence of seniors like Faf and DK help Virat and Maxi bat freely? Is RCB bowling attack the best? Okay, Austin, my first take on RCB is I think this is the first time in a very long time जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट्स अ प्रॉपर स्क्वाड बैलेंस. टीम का देखें, अगर आप बॉलिंग देखें, एंड आई एग्री विद यू, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स. और कहीं ना कहीं इट्स लुकिंग लाइक अ यूनिट. इसके पहले इट वुड बी वेरी वेरी मच लाइक विराट, एबीडी एंड क्रिस गेल बिफोर, एंड मे बी एरन फिंच बीच में एक साल, और लास्ट एट वाज विराट, ग्लेन एंड एबीडी, मैक्सवेल. सो इस बार थोड़ा सा अलग दिख रहा है somehow. I don't know, is it could be my mindset or something, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फर्स्ट टाइम आरसीबी got a really balanced squad जहाँ पे you have good fast bowlers as you've mentioned, Hazelwood, Siraj, Harshal, Hasranga, and they also have Karan Sharma, Shahbaz Ahmed. So it's not necessary to play Hasranga every game क्योंकि Karan Sharma हालांकि पिछले एक दो साल से नहीं खेला है, but I think he's a good bowler. He's been playing domestic cricket, मुश्ताक अली वगैरह and all that, so he's been all right. So ऐसा नहीं है कि नहीं. और एक चीज है कि they also have someone like an Anuj Rawat who's been really good, so there is a possibility that he can do the job at 5-6, जो कि एक प्रॉब्लम रहा है आरसीबी के लिए कि यार टॉप 3-4 तो ठीक है लेकिन उसके बाद क्या. और जैसे आपने कहा कि सीनियर्स लाइक डीके and all these guys, that will take away the pressure because I like that lower middle order यहाँ पे, with Hasaranga अगर खेलते हैं, DK, so that it is not a top 3 side anymore or top 4 side anymore कि भैया आप वो top 4 के ऊपर ही डिपेंड करके पूरा टीम चलेगा. And I like this RCB side. और I was looking at options यहाँ पे, उनका टीम क्या हो सकता है. And I honestly I like what I see here. Virat can open with Faf Duplessis. Then you can have someone like maybe an Anuj Rawat at three. He's good. He's a good keeper as well. Maybe Anuj at three, and then Maxwell at four. Maipal Lomroj, he's a useful cricketer. With experience IPL का left arm spin भी डाल देते हैं. Maybe him at five and Dinesh Karthik at six, or Dinesh DK at five and him at six, and then you have Hasranga at seven and all. I think it's a good side. You have Shahbaz Ahmed also. He's again someone who can bat. Obviously, char over. So I think it's a good side, Austin, and I like the look of RCB. Only now the big question is who will lead this side. Maybe it's going to be Faf, but again, Faf, this is his first year. Maybe Maxwell, क्योंकि this is his second year. Faf का क्या है कि even though he has the experience of leading an international side, but RCB में this is his first year. So it's going to be very very interesting how they go about with that captaincy issue. Right. Okay. Let's move on. Prashant Srivastava, do you think Livingston overpriced? Yeah, Livingston went for how much? Livingston went for
I think 11 point something. Yeah, I think Punjab, no? Yeah, I think 11 point something, which I think 11.5 CR, which I think it's a little overpriced. But as a player, I think he's a good player. He's in form. 100 में बहुत रन बनाए, वाइटैलिटी जो T20 इंग्लैंड में होता है, बिग बैश में स्कोर्ड रन्स, अभी PSL खेल रहे हैं, वहाँ पे भी ठीक ठाक खेल रहे हैं. और व्हाट ही ऑल्सो ब्रिंग्स लियम लिविंगस्टोन इज फ्लेक्सिबिलिटी. ओपन कर सकते हैं, बीच में खेल सकते हैं, फिनिशर भी खेल सकते हैं, ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डालते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं. सो आई थिंक ही ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल. और एक ना उनमें एक जो एटीट्यूड है लड़ने का, दैट इज द अदर थिंग आई लाइक अबाउट लियम लिविंगस्टन. इन टर्म्स ऑफ पैसा, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन एन ऑक्शन एंड बिल्डिंग अ टीम. ऑक्शन में जब आप बैठते हैं ना, तब आप ना सोचते नहीं है कि आप एक प्लेयर के लिए, क्योंकि आप क्या क्या होता है कि एक पोजीशन के लिए और प्लेयर्स के लिए आपका एक बैंडविड्थ होता है कि मैं इतने से इतना तक, आपका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यार लगभग इतने में जाएगा प्लेयर, और इसके ऊपर मैं इतना तक जा सकता हूँ. I think when you look at that middle order, it seems to me that Punjab Kings were always looking to get him, Liam Livingston. क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर देखेंगे तो इट्स शाहरुख खान एंड हिम, और ओवरसीज मिडिल ऑर्डर में वही है. तो आई थिंक शुरू से जब आप सोचते हैं कि ये मेरा मार्की प्लेयर है एंड आई वांट टू गो फॉर हिम, then up you're ready to pay that kind of money. So at times it is not directly related, that money that you get is not directly related to a player's stature ho या abilities ho. uh, at times it is also about demand supply, a particular franchisees, because obviously, I mean, not just Punjab, the others also wanted him, right? Tabhi two teen franchises went for him, and that's the reason he got that money. So yeah, I honestly believe कि end of the day, what you want to see is open that squad and say, yeah, squad कैसा है, कितने पैसे लगे, किसको कितना दिया. I don't think उतना matter करता है as long as you're happy with the squad, right? uh, yeah. रेवा कुलश्रेष्ठा कह रही हैं, सर हु डू यू थिंक विल बी ओपनिंग पार्टनर ऑफ ऋतुराज गायकवाड, विल रॉबी और एनी अदर बैटर लाइक डेवन कॉनवा. ओके, सो उसके लिए आई थिंक, मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ओपनिंग थॉट्स वुड बी ऋतुराज के साथ रॉबिन. Again, Conway is a good option, not just as an opener, but as a middle order also. I think spin बहुत अच्छा खेलते हैं, तभी even though he opens in test match cricket, but T20 और वनडे में न्यूजीलैंड के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, क्योंकि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट अच्छा करते हैं, और बड़े शॉट खेल सकते हैं. सो आई थिंक they'll go with ऋतुराज and रॉबिन. उनके ओवरसीज कौन हो गए? मोइन अली, ड्वेन ब्रावो, or fast bowler में maybe Adam Mill. I think that was a good buy, and a very cheap buy as well मेरे हिसाब से. So maybe Adam Mill, Moeen Ali, Dwayne Bravo, तीन, or yeah, could maybe Devon Conway can play in the middle order. चार बार में, it's not a bad idea, but yeah, I think Robin and Ruturaj would be my preferred guys. Yeah. Right, Siddharth Kiran sir, do you think due to the lack of Indian experienced players and also in all 10 teams, there are some problems? So should IPL Council allow five? Big fan of your commentary. Thank you so very much, Siddharth. Appreciate that here. I don't think so. I think there'll be a lot of new stars coming through, because obviously there's a lot of new players that have been picked up by the franchisees, और उनको मौका जरूर मिलेगा. तो इवन तो आपको इस वक्त पेपर पे ऑन पेपर लग रहा है कि नहीं यार उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, बट आई थिंक द काइंड ऑफ टैलेंट हमारे देश में है, I think you'll be surprised some of the new guys coming through and what talent we have. So I don't think that five overseas players should be allowed. I think four is fine. Just wait and watch this IPL, and like I said, you'll see some really good young talent coming through, Siddharth. And I'm very, very happy that it's only four and not five. I'm happy with that.
Hi, Rahul. The negative side of Archer deal is injured for last 1 year. Ashes in England and World Cup next year. England's three format bowler. Won't be surprised if he's next. Rahul and I was on a friend's platform during the auction और मैंने यही कहा राहुल के देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है जोफ्रा आर्चर 8 CR में वाटर डील बट इट्स अ वेरी ट्रिकी डील जैसे आपने कहा इसका नेगेटिव साइड जैसे आपने कहा एंड इस वक्त इज ऑलरेडी बीन आउट ऑफ क्रिकेट फॉर अ ईयर एंड अ हाफ राइट अभी तक क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया है मेरे ख्याल से 2 ऑपरेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एल्बो के ऊपर सो कब वापस आएंगे दैट इज अ बिग क्वेश्चन दूसरा वापस आएंगे भी तो विल ही बी द सेम जोफ्रा आर्चर वी डोंट नो thirdly as you mentioned he's a three format player and obviously English cricket is also as almost as busy as Indian cricket so he'll be playing a lot of cricket but I will not be surprised Rahul if Jofra says I can't play test cricket anymore I'll only play white ball cricket. I will not be surprised if that comes out in the next 6 8 months. But before that, as you rightly mentioned, कि यार जो जिस शख्स ने पिछले 1 1.5 साल से नहीं खेला है अभी भी नेट में बॉल डालना शुरू नहीं किया है पीछे डालना शुरू किया था कुछ 6 महीने पहले दोबारा ही had to go for a surgery. So we don't know where it stands. On paper, it looks really good. Jofra Archer, 8 CR, match winner. Bumrah, Jofra Archer, brilliant combo, exciting combo. But we'll have to wait and watch. I think it's a big gamble. Uh, yeah, and I don't know whether it is worth it or not. Only time will tell, Rahul. Sitesh Kumar Panda is Mumbai Indian bowling department. It's weakest among all other teams this season. Right, let me quickly open my notes. Bumrah, Jaidev Unadkat, Jofra Archer, Daniel Sams, uh, Mohammad Arshad Khan, Riley Meredith. Yeah, mujhe actually, I think when I look at that Mumbai Indian team, it seems, and I was also hearing Mr. Akash Ambani talking वो जो interview सा था, and he said where obviously mentioned he was very happy with Ishan and and Jofra Archer, and looking forward to seeing Jofra next year. And I think he mentioned something like we'll try to compete this year. When I heard that, और जब मैं टीम देखता हूँ मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि this team is meant for the future क्योंकि this again let me reiterate जो मुझे सुनने में आ रहा है और I'm sure it's in the public domain as well कि this might be the last mega auction इसके बाद वो छोटे छोटे ऑक्शन होते रहेंगे तो उस नजरिए से शायद मुंबई इंडियंस आर थिंकिंग बस लेट्स लुक एट द फ्यूचर बिकॉज जैसे डिवॉल्व ब्रेविस आज 40 बनाए 26 बॉल्स में 42 43 कुछ बनाए इन साउथ अफ्रीका T20 जो उनका डोमेस्टिक T20 होता है he's one for the future he's special he's really good अभी अंडर 19 में उनको देख के आ रहा हूँ एन तिलक वर्मा अगेन अ वेरी टैलेंटेड बैटर फ्रॉम हैदराबाद ही इज अंडर 19 क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप खेला था तो आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन ही डिड नॉट प्ले दिस ईयर्स अंडर 19 वर्ल्ड कप then if you see the other bowlers and stuff like that, it just looks like more of a team for the future. Sanjay Yadav, he's been around for a while, but yeah. Tim David again. I don't know. I mean, I look at that side and मुझे ऐसा लग रहा है कि यार it's more to do with the future and also keeping in mind next year's small छोटा वाला auction क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है and please correct me if I'm getting this wrong if any one of you have that kind of information these contracts are for 3 years, but it's 1 + 1 + 1. So if the franchisee wants, it can release a player next year. So if Jofra Archer is available, please don't be surprised if they release a few of those fast bowlers to open up the purse to buy someone like Ben Stokes or let's say a Sam Curran. So don't be surprised. I think Mumbai Indians का थोड़ा सा जो इस auction में view था was a little long-term view rather than just this season. They will be competitive this season, but I think it's more forward-looking था Mumbai Indians का is what I think, Satish. Okay. Yash Pratap Singh. Sir, who will finish for Delhi Capitals? Okay.
Right. So Delhi Capitals, I think Delhi Capitals are another good side यार. मेरे हिसाब से top three sides में से I'd say Delhi is there. Uh, Obviously Rishabh will play at maybe four. You have someone like Sarfaraz might they be there, Mandeep might be there. Lalit Yadav is one guy जिसके ऊपर पिछले सीजन भी दिल्ली ने काफी भरोसा दिखाया था. I think Rovman Powell would be one of those guys. So they will have obviously Rovman Pal there. Rishabh will hopefully will take a lot more responsibility this year, and I'm sure he will. So I think that's a really good side. और yeah, रिपल पटेल एक और ऑलराउंडर है. एक ही मैच शायद खेला था पिछले सीजन, शायद कहाँ से आया था, दो खेला होगा. बट वॉच आउट फॉर दिस गाय. ही इज लाइक अ प्रॉपर ऑलराउंडर जो बॉल डालता है, बैट करता है, लंबे हिट लगाता है. सो आई थिंक दैट मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर लुक्स गुड फॉर मी यार. ऐसा कोई बहुत बड़ा शायद नाम ना हो. रॉवमन पाल इज इन गुड फॉर्म. ललित यादव अच्छे हिट लगा सकता है. अक्षर पटेल, रिपल. But they'll be depending a lot on the top four. Let's say Prithvi, David Warner, Mitchell Marsh, and Rishabh himself. ये जो चार लोग हैं, I think yeah. और उसके बाद let's not forget they have someone like Shardul Thakur as well. So 8 नंबर तक they have batting, right? Batting मतलब जो ठीक ठाक बैटिंग कर सकते हैं. So yeah, so there is I really like that side. So yeah, there is no big finisher, so to say, like an Andre Russell or a Pollard or something. But I think Rishabh is developing into a very mature player, and I like that. I like that squad actually. Okay, Sandesh. Okay, sir, how do you rate Punjab auction? Again, मैंने अभी जैसे कहा कि टॉप थ्री उसमें से एक दिल्ली है, तो एक पंजाब किंग्स भी. आई थिंक पंजाब किंग्स वर आई थिंक really good squad. एक minute, yeah, really good squad. Mayank, Shikhar maybe open, Johnny Bairstow 3, Liam Livingstone at 4, Shahrukh Khan at 5, राज अंगद. और मुझे अच्छी बात पता है क्या लगा कि इस टीम में they've picked बैंकर्स लाइक शिखर धवन, जो आपको पता है कि बुरा साल भी अगर उनका जाता है तो शिखर 400 रन बनाएंगे, अपने बुरे साल में भी 400 रन बनाएंगे. एंड यू हैव दोस मैच विनर्स मैवरिक्स लाइक लियम लिविंगस्टन, ओडियन स्मिथ, शाहरुख खान, कि भैया इनका बल्ला चलेगा तो 99% चांस है टीम जीतेगी. सो यू हैव दीज बैंकर्स जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि यार बुरे वक्त भी. और मयंक भी, मैवरिक्स में मयंक भी डालूंगा मैं. And you also have these guys, and also you have youngsters. Harpreet Brar was very good last season. राज अंगद बाबा मुझे लगता है अभी भी उस तरीके से तैयार नहीं है. एक आधा साल और लग सकता है, बट अगेन ही इज अ गुड टैलेंट. ऋतिक चैटर्जी बंगाल का, ही इज अ ऑफ स्पिन ऑलराउंडर, गुड टैलेंट. सो आई लाइक दैट. आई टॉप थ्री में मेरे ख्याल से नंबर वन या नंबर टू पे मैं इस स्क्वाड को रखूंगा पंजाब के. आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड. बॉलिंग यूनिट भी अगर आप देख लें, Arshdeep has been fantastic. So Arshdeep, Rabada, you have Sandeep Sharma, but you might not, मतलब playing 11 में शायद I Odean Smith would be that third seamer, Rahul Chahar. So I think it's a good side. Yeah, it's a good side. Valuable distribution, nice. Valuable distribution. Do you think Lucknow can win its first season, or it would be Punjab? Sure, amazing hitters, yes. Or CSK, the defending champions, or MI, weak middle order. Other hot favorites as always. Okay, valuable distribution. I think it will be, if it's based on squad and names on the paper. अगर सिर्फ स्क्वाड और नाम के हिसाब से जाएं तो मेरे हिसाब से द टॉप थ्री अपार्ट फ्रॉम डीसी एंड पंजाब इज लखनऊ. और मैं लखनऊ और पंजाब को टॉप ब्रैकेट में रखूंगा. उसके थोड़ा सा नीचे मैं डीसी को रखूंगा. और नीचे से अगर मैं ऊपर जाऊं तो आई थिंक एसआरएच, मुंबई, फिर उसके ऊपर थोड़ा केकेआर एंड ऑल दिस गाइस. सो ऐसा होगा. सो इट बी डिफिकल्ट. कैसे एक्चुअली क्या होगा, आई थिंक पहले 2-3 मैच के बाद थोड़ा आइडिया हो जाएगा. कि अमूमन ऐसा होता है कि जो जिस नजरिए से मैं स्क्वाड को देख रहा हूँ और जो प्लेइंग 11, जैसे मैं ऐसे लिख के रखता हूँ प्लेइंग 11 एंड ऑप्शंस क्या क्या ऐसे करके, हो सकता है कि बिल्कुल ही अलग हो उनका प्लेइंग 11, उनकी सोच अलग हो. So it's going to be important to see how they gel together, and things, those intangible things.
Yeah, but again, LSG as in Lucknow Super Giants, I think really good squad, was absolutely brilliant, is what I thought their squad was. Right, sir. What will be the weakness of RCB? RCB weakness. Yeah, I don't see an apparent weakness in RCB. There is nothing that I can kind of put my finger to and say, कि नहीं यार ये नहीं हुआ. Because yeah, I mean, you, I, I think it's fine, यार. I think it's a good side. आप अगर स्पिनर देख लें तो है इंडियन लेग स्पिनर हसरंगा. आई थिंक इज अ मैच विनर हसरंगा मेरे लिए. But if you don't want to play him, you have Karan Sharma. Shabazz Ahmed did all right, did his job very well. इसमें you have good middle order batters. You have the experience of DKN in the middle order, जो कि थोड़ा सा problem रहा है in the past for RCB. You have Harshal Patel, Mohammad Syed, the bowling looks good. So I honestly don't know, Darshan, ki if there is any apparent uh, weakness per se in that RCB squad. Right. Who else do we have? Adi again, yes. Adi, do you think that RCB will play Finn Allen at 3 and Maxi at 4 and then Indian core with the lines of DK and Lomro in the low middle order? Okay, let's look at their overseas options. Right. So you have obviously Maxwell for sure, Faf Duplessis for sure as well. So you got Glenn and Faf Duplessis, two gone. Uh, then you have, I'm not putting Hasranga in that bracket abhi. Josh Hazelwood, तो तीन हो गए. So now the option is either Hasranga or Final. So I'd rather have, I see more value in Hasranga at number 7, 8, and obviously leg spin than Finn Allen, because I already have Faf or Glenn Udar with Virat. Uh, I think I rather have, so this roughly would be my four overseas as of now with them. Josh Hazelwood, Hasaranga, Faf Duplessis, Glenn Maxwell. They also have Sherfin Rutherford, who's doing all right actually in PSL and T20 tournaments. But I don't think obviously he'll be one of the first guys on that list or on that team list. But yeah, मेरे ये चार होंगे: Maxwell, Faf Duplessis, Hasranga, and Josh Hazelwood. राइट. सरिता सिंह, या सर केकेआर को कौन सा विकेट कीपर खिलाना चाहिए? सैम बिलिंग. यार, आई लाइक शेल्डन जैक्सन एंड अनफॉर्चुनेटली ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स. काफी साल से आईपीएल स्क्वाड में भी रहे हैं, केकेआर के साथ ही रहे हैं, लेकिन उतना मौके नहीं मिले. लेकिन व्हेन आई लुक एट दैट बैटिंग ऑर्डर, I'd rather go with Sam Billings. क्योंकि आप फिर मतलब एक ही चीज वो है ना कि ओवरसीज पे फिर आप ये देखें कि फिर चार कौन होंगे. सो आई थिंक द क्वेश्चन विल बी एलेक्स हेल्स और सैम बिलिंग्स. क्योंकि आंड्रे रसल डेफिनेटली होंगे. आपके पैट कमिंस डेफिनेटली होंगे दो, सुनील नारायण तीन. तो चौथा जो प्लेयर है वो आपके द चॉइस इज सैम बिलिंग्स और एलेक्स हेल्स. क्योंकि क्या है कि और एक चीज़ पे डिपेंड करता है, काफ़ी चीज़ों पे करता है. फॉर एग्जांपल वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में कौन है? नितिश, श्रेयस, रिंकू सिंह, बाबा अपराजित, जो कि खेलेंगे. श्रेयस अगर 3 पे खेलता है, वेंकटेश ओपन करता है, एंड लेट्स से शेल्डन जैक्सन इज प्लेइंग एज एन ओपनर. तो आपको देखना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर फायर कर रहा है कि नहीं. अगर फिर फायर नहीं कर रहा तो यू रादर हैव सैम बिलिंग्स प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर, something on those lines here. Middle order, and then you play maybe Nitish Rana to open or something like that. So वो चीजें I think पहले एक दो मैच के बाद. But ideally speaking, I'd go with Sam Billings, Andre Russell, Pat Cummins, and Sunil Narayan. My four. Okay. Who do we have? Reva. Sir, do you think that SRH has bought more than sufficient all-rounder? Yeah, SRH, day one, I was a little disappointed with SRH with all that money that they had, personally. Abhi bhi, I think they did all right buying Aiden Markram and Romario Shepherd last May. Yesterday, they bought those two guys. But
I mean, they've bought a lot of all rounders, as you saying, but where is the quality there? You know what I'm saying? कि यार आपके मैच विनर्स कहाँ हैं यार? मैं जब उस स्क्वाड में देखता हूँ एज कम्पेयर टू द अदर्स, वेयर आर दोज मैवरिक्स जो आपको कंसिस्टेंट नहीं होंगे, लेकिन आपको सीजन में एक दो मैच जिता के देंगे. Yeah, I and that is my only concern. Marco Jansen वगैरह अच्छे buys yesterday was a good day. Marco Jansen, Romario Shepherd. Uh, क्योंकि एक चीज़ है, कीन विलियमसन has been struggling with his elbow injury, tennis elbow. जो मैं सुन रहा हूँ जो अभी अगला सीरीज होने वाला है, आई थिंक ही इज नॉट गोना प्ले दैट आल्सो. तो दैट इज समथिंग दैट हैज बीन बॉदरिंग हिम फॉर ईयर एंड अ हाफ अभी. सो उससे कैसे रिकवर करते हैं? निकलस पूरन लास्ट एक डेढ़ साल हालांकि ही डिड प्ले वेल अगेंस्ट इंग्लैंड, जो T20 सीरीज हुआ है वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का, लेकिन लास्ट डेढ़ साल में ज़्यादा रन निकलस पूरन ने भी नहीं बनाया. तो कहीं ना कहीं यार हम, या आई थिंक उस साइड में देर आर सम होल्स. आई मीन देर आर गुड क्रिकेटर्स लाइक राहुल त्रिपाठी एंड ऑल, गुड क्रिकेटर्स, बट यू नो यू नीड हर एक टीम में एटलीस्ट एक दो मैवरिक्स जो जिस दिन खेलेगा मैच जिता के देगा. एंड आई डोंट सी वैसे मैवरिक्स इस टीम में उतने ज़्यादा खास. बॉलिंग में भी उमरान मलिक bowled really well, but does he have the experience? नटराजन अभी इंजरी से बाहर निकल के आए हैं. भूवी लास्ट एक डेढ़ साल से उनका भी फॉर्म खास नहीं रहा है. कार्तिक त्यागी इज गुड, मार्को जानसन इज गुड. सो या आई डोंट नो, आई मीन थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हल्की लग रही है ये टीम कंपैरेटिवली ऑन पेपर. रेवा. Hi, Mukesh Kumar. Hello, sir. Sorry to say IPL games are too long. Why 20 games not complete? यार आपने मेरी मेरी मन की बात कह दी मुकेश. आई कंप्लीटली एग्री एंड आई थिंक द अथॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ द IPL काउंसिल, द अंपायर्स, दे हैव टू बी स्ट्रिक्ट यार. क्योंकि अगर यार वो 4 4 घंटे का टीम मैच चलता है रात के 11 साढ़े 11 बजे, लोगों को अगले दिन ऑफिस होता है, स्कूल होता है. लेकिन आई कैन टेल यू अबाउट माई किड्स. मेरे बच्चे, मन तो करता है खेल देखने का, लेकिन यार कहाँ साढ़े 11 साढ़े 11 बजे तक जगे रहेंगे, फिर क्या बात. और मैच देखने के बाद ही तो यू कांट स्लीप यार. सो सोते सोते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, फिर सवेरे 6:30 बजे उठो. आई थिंक I completely agree with you मुकेश कि they should be really strict कि भैया आपको 3 घंटे में मैच खत्म करना है. And they should be penalizing teams, and penalizing मतलब not monetarily, but maybe banning of captains or penalty runs or something like that. ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए is what I think, and I agree with you मुकेश. Right. Nikhil Sani, sir, Mumbai always don't buy big names. Yes. They buy young ones more, they groom them and make them big. True. Tilak Verma, Sanjay, yeah, but they can bowl and bat, they can be replacement of Pandya. Yes, absolutely. मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा. तभी निखिल, जैसे मैंने शुरू में कहा, एंड आई होप यू हर्ड मी सेइंग कि ये टीम और जो स्ट्रैटेजी इस साल का मुझे देख के लगा was more to do with the future than this season. इस सीजन दे वांट टू बी कंपेरेटिव, बट द आइडिया इज कि अगले फ्यूचर्स थिंकिंग कि अगले 2 साल में 3 साल में क्या होने वाला है. और अगर एक्चुअली अगर मेगा ऑक्शन नहीं होता है, देन क्या है कि देन यू कैन कीप द कोर. सो दैट स्ट्रैटेजी ऑल्सो मेक सेंस कि आपने अपने कोर को, फिर ऐसा नहीं होगा कि 3 साल बाद आपको छोड़ना पड़ेगा प्लेयर और सिर्फ 4 ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं. अगर मेगा ऑक्शन नहीं होता, उसका मतलब आप अपने 11 के 11 रख सकते हैं या 18 के 18 रख सकते हैं फॉर एवर, right? If you don't want to change or if you don't want new talent coming in. So I think I agree with you ki that's been their policy before also. And yeah, and I'm not against that idea at all. I think that's a good idea. Yeah. Valuable distributions. Thanks, sir, for answering. Your lives are just amazing. Waiting for it more often as it has incredible calmness to it. Okay, valuable distribution. I will be more regular as I've promised before also, but and I have some news for you guys as well, and I'll let you know at the end.
Uh, it's 40 minutes already. Maybe let's take another three questions and then I'll share something with you all. Yeah, Piyush, Dadish 10th C. Oh, that's your class and section, is it, Piyush? Hi, sir. Do you think RCB should retain Virat, Chahal, Harshal, Maxi, and go furthermore on Trent Bolt? Yeah, I mean, I was a little surprised with that. कि यार UZ के लिए क्यों नहीं गए? Um, because he's been brilliant here and he's bowling all right now. ऐसा नहीं. Uh, but yeah, I was a little surprised. But उन्होंने leg spinner किसको लिया? हसरंगा को लिया. Okay, हसरंगा है कर्ण शर्मा. Khan is also what 34, 35. तो ऐसा नहीं long term नहीं होंगे. Khan, but yeah, I was a little surprised कि UZ को नहीं उन्होंने retain किया. And Trent Bolt, yeah, जा सकते थे. But who do they have now? Let me. Uh, I think bowling they have enough here. They have या जॉश हेजलवुड. और एक चीज सोचे कि ओके जो पिचेस हैं मुंबई में, पुणे वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, ब्रबॉन में और डीवाई पाटिल में जनरली बाउंस होता है. तो वहां पे जॉश हेजलवुड जैसे बॉलर जो बैक ऑफ लेंथ रखते हैं, दे आर, और जिनके पास पेस है, थोड़ा एक्स्ट्रा पेस, उनको ज़्यादा फायदा होता है. बिकॉज वो जो बाउंस के साथ, क्योंकि क्या होता है कि जो टेल एंड, सॉरी, जो फिनिशर्स हैं, वो लास्ट के ओवर्स में क्या करते हैं, थोड़ा स्टांस ओपन करते हैं और वो दो चीज़ें ढूंढते हैं, स्लोअर डिलीवरी और यॉर्कर लेंथ. तो वो फंसते हैं वो बैक ऑफ लेंथ वाले में, स्पेशली ऐसे पिचेस के ऊपर जहाँ पे बाउंस ज़्यादा होता है. अगर आप उठा के देख लें जो भी सो कॉल्ड बिग हिटर्स हैं, आप लास्ट एक साल में ज़्यादा उन्होंने रन नहीं बनाए, क्योंकि कहाँ पे मैचेस थे, दुबई, आबू धाबी प्रिडोमिनेंटली, जहाँ पे बाउंस ज़्यादा था, राइट. तो अगर यहाँ पे चेस्ट हाइट तक बॉल रहता है और पेस रहता है, तो इट्स डिफिकल्ट टू हिट दोज बिग शॉट्स फॉर मोस्ट ऑफ द गाइज, मैक्सिमम गाइज. तो उस नज़रिए से आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया जो जेसन बेरेंडॉफ को भी, बिकॉज ऑफ हिज हाइट ही गेट्स एक्स्ट्रा बाउंस. बट मेरे हिसाब से जॉश हेजलवुड वुड बी द फर्स्ट चॉइस अलॉन्ग विद सिराज और हर्षल पटेल. Yeah, so I think while I agree, Trent Bolt's been brilliant. But yeah, sorry, I think they have a good bowling side irrespective. Hmm. Yeah. Kostov, okay. Predict the top four teams on the basis of auction. Okay. Top four teams on the basis of auction. Top three, I've already mentioned. Is DC, LSG, Punjab, and I'm gonna go with RC. Oh shit. No. Yeah, RCB. So Delhi, RCB, Punjab, and LSG. My top four. Yeah, 8 minute. Okay, let me just take this call. I'm sorry. Sorry, guys. It's my wife calling, man. दो तीन मिस कॉल आ गए थे. Just because I'm traveling, I'm in Calcutta right now. So as in I'm at home, but I'm at hotel because of the bubble. So जब घर से दो तीन मिस कॉल आ जाते हैं तो थोड़ा सा डर लगने लगता है कि सब ठीक ठाक है कि नहीं. But yeah, so everything's all right. Yeah, so I'll call her back in a bit. Right. Okay. Sorry about that, guys. So Kostob, hopefully I've answered your question for top four teams according to the squads, according to me. Right. Right. Do we have anyone else? Red Star. Nice. Sir, how much you satisfied with CSK squad? I like that squad. CSK squad is, it's almost the same squad, है ना? अगर आप CSK squad को देखें, अगर आप playing 11 कहाँ गया CSK का, या अगर आप CSK squad को देखें तो it's a good squad यार. playing 11, अगर मैं, मेरे हिसाब से जो हो सकता है is ऋतुराज, रॉबिन, मोइन अली, अंबती रायडू, जडेजा. एमएसडी शुरू के मैचेस खेलेंगे. ड्वेन ब्रावो, दीपक चहर, एडम मिल, क्रिस जॉर्डन, यानी एडम मिल नहीं शायद खेलें. एडम मिल, someone like Simmerjeet Hungerkeker might play, and Prashant Solanki, the leggy.
that's a good squad, yeah. That's a good squad. लेकिन वही है कि it's the same people. I mean, the best part about CSK कि अभी भी core is the same. दीपक भी है, ड्वेन भी है, जड्डू है, अंबती, मोइन, रॉबिन, ऋतुराज. It's like almost the same squad, यार. Keem Asif, if I don't know if they want to play Keem Asif, whatever. But it's just the same squad. So that helps. So yeah, so I like the CSK squad. पहले दिन के बाद लग रहा था यार, where are they going with it? But I think yesterday they picked really good buys, or it's a very typical MSD CSK side. You have the same players, familiarity, age. Okay, age is again it's relative. Uh, but the interesting part is, what if MSD, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि MSD 14 के 14 मैचेस खेलेंगे. तो अगर MSD नहीं खेलते तो दो सवाल ऑब्वियसली उठते हैं कि कप्तानी कौन करेगा, और सेकेंडली कीपर कौन. कीपर मे बी, you have Devon Conway, जगदीशन भी हैं, obviously Robin है. So actually that shouldn't be a problem. Robin है यार. So yeah, I like that side, Red Star. All right. Okay. Do we have any more? Ah, right. Updates on my YouTube channel. Right. It's already been 46 minutes. I'm sorry, guys. Huh. So the okay YouTube channel का जो अभी मैं सोच रहा था, and you've got to bear with me कि obviously I'll be doing live once every 10 days at least, and I'll let you or let all you guys know कि कब मैं जा रहा हूँ live. I will give you heads up एक दिन पहले, या शाम को करूंगा तो सवेरे बता दूंगा आप लोगों को. But I'll start to put a lot more Bengali videos. Please don't take it otherwise, but क्या हो रहा है कि there are content wise Hindi में, you have really good channels like Akash's it's a brilliant channel. तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार वी आर competing with each other, इतना अच्छा दोस्त है मेरा, and I don't want to be in that space. I rather do something which is a little more exclusive. और अपना तो so I thought I'm actually was thinking of start doing a few more videos in Bengali. But what I will do is I will come live, and hopefully all of you will still stick with me, and will definitely do lives. Because I'll tell you, I'll let out a secret to all of you. I rather do lives every second day than do videos, because I'm too lazy to do videos. I'll be very, very honest. I'm the laziest guy you'll ever come across. So especially when it comes to all this. So yeah, so live I'll be regular, as I'll try and do once every week, and obviously live will be like this, but I'll be putting up videos in Bengali. um, I'm sure there are Bengalis here and people who understand and all. I hope you don't hold that against me and leave this family. I still hope to get your support with this new plan. But I do promise you कि अगर videos बंगाली में डालूंगा, but I will keep doing lives like this. I will be meeting all of you. And on that note, I must also thank you, because all of you took your time out to be here uh, with me and spend the last 45, 50 minutes here with me, of your precious time, and sticking with me, even though I haven't been active for the last 1.5 महीने 2 महीने. So yeah, so I'll this is the plan, YouTube channel ka plan ke videos in Bengali, live like this once a week, and take this forward. So all in all, let me sum it up. YouTube channel ka ho gaya. Summing up is good auction, brilliant. Top four teams as I mentioned, but I think teams like CSK uh, and Gujarat Titans are good as well. RR, I'm not too sure. RR or SRH का मुझे उतना पसंद नहीं है. KKR again, if they manage to keep their players fit, their first 11 fit, it's a good side. But अगर fitness issues आए तो will be a little bit of an issue for them, because backups नहीं है, as we've discussed. And another important thing, or एक चीज I wanted to touch upon, was the India Under-19 World Cup. It was absolutely brilliant, that experience. I must share 2 minutes with you all with that experience of the Under-19 World Cup. It was so exciting to see the young lot
people like Dewald Brevis and all that, जो बाहर के जो overseas हैं youngsters, and obviously the Indian boys, and obviously big congratulations to the Indian boys क्योंकि I know they went through a lot. You know, there I still remember second day, second game, I was doing the toss, and अचानक से I saw Nishant running in, and I was like क्या हो गया? बोला नहीं वो अवेलेबल नहीं है, उन लोगों को कोविड हो गया है। और कोविड हुआ है मतलब दे फाउंड आउट एट द ग्राउंड मॉर्निंग में कि राशिद और यश को ये हो गया है, एंड निशांत वाज लाइक अच्छा मैं कप्तान हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है, आपको पता है क्या चेंजेस? ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। लाइक ओके व्हाटएवर, कैरी ऑन। एंड दोज गाइस, फिर उसके बाद मैं यश से बात कर रहा था, आई थिंक जब वो बांग्लादेश वाला क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के बाद, मैंने कहा एक्सपीरियंस कैसा था? बोला कि जरा सा एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं हुआ। सो kudos to them and that team, जो लोग उन्होंने देखा है पिछले 3-4 हफ्ते, seen really really tough for them those four weeks, but it was very very exciting to see the next generation, and I'll keep you posted with all that as well, क्या हो रहा है under 19 वगैरह and all that. Yeah, and like I said, do stick on with this channel, and I'll be doing a lot of lives once a week at least. Videos will be in Bengali. Yeah, and thanks again. Thanks very, very much for tuning in and spending the last 51.25 seconds of your precious time with me. Right. Thank you, and I'll see you soon. Bye for now. Thanks again, guys.